Good morning, friend. Welcome to back my channel. Good morning, friend. आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर एएलपी एग्जाम। गुड मॉर्निंग, फ्रेंड। नहीं मैं उनके नॉइस में ज्यादा क्यों हो रहा है? Good morning, friend. Welcome to back my channel. Now we will see the complete strategy for the ALP exam, and we have left some time today onward that you will see how many days that we have left right now. We have the how many time that right now left that we will see in the 16
17 and 18 of February. So right now we are in 22 of what January, and we have to move for 16, 17, and 18 of February. So right now that 8 days here and that remaining of 16 days the February. So total of days that 2 4 days. So we should prepare for according those days. So first we to look into what are the syllabus for that have to left to complete, and what are the things basically we need to do onwards right now. So first we will discuss here कि हमारे जो टॉपिक बचे हैं, सो इन द करंट अफेयर दैट वी विल डिस्कस later on, but we have to first finish the static portion that right now. So in the first you will see in the mental ability, so in the reasoning, so almost syllabus we have did in the whatever we are preparing right now for the exam. So right now we did the every each and every point and each and every topics for the reasoning syllabus. But now we have to move the another segment, that is quant mathematics syllabus. So mathematics you will see the completely if you stick on the syllabus. So we have to first see the what are the topics basically we didn't complete. So just we figure out that how many topics that we didn't complete. So right now we move to the topics one by one, and according to that we will prepare for the examination. So first one that we have to make the rough analysis of the topic that we have to complete within the 2 days, 3 days, 4 days, and the data have to work managed according to the time. So now we have first make out the figure of what are the topics basically we left and what are the topics basically we have to more concentration for the preparation. So first in the mathematics syllabus you will look into that mensuration portion. No, so there we have completed that one. So another topic is number system, also completed Bodmas, decimal, fraction, SCM, SCF, ratio and proportion. So these topic might have to what consider that have to prepare. So ratio and proportion. So right now, but not proportion, ratio only there. Ratio and proportion. So first one that percentage, nothing, time and work, time and distance, simple compound interest, profit and loss, algebra, geometry and trigonometry, elementary statics, square root, age calculation, calendar, clock, pipe and system. So here each and every topic we did and we completed, but have to revision on that. So how many topics that we have to revise? So we have three what segment in our page in our notebook in the single page, that how many. First one is the segment is basically that we have completed. Second one have to remember, have to revision. Our third one is that a revision have another segment. And first one is we have completed the topic. The first one is completed, we completed. How many topics we completed, that have to write first one. So first one, that how many completed, just we figure out that one. So in the mensuration, yes, absolutely we completed that one. You will see mensuration we have completed that one. So no need to the extra effort on that.
So in the first topic that we have already mentioned that in the mensuration there is no need to separate topic there. Number system. Mensuration, number system and BODMAS. So BODMAS also no need to what extra we will make the notes and now we see the decimals. So after the decimals that another chapter is a fraction and after the fraction you will see the LCM and SCF and after the LCM SCF the another is the ratio and proportion ratio and proportion percentage time and time and work time and work time and distance time and distance simple and compound interest simple and compound interest compound interest profit and loss algebra algebra geometry and trigonometry elementary statics statics square root square root age calculation age calculation after the age calculation calendar and after the calendar pipe and cistern pipe and cistern after the pipe cistern only the last topic that pipe and cistern so in that you will see that how many topic that we should revision so in that topic that we have figured out the some topics here that have to remember first one is the first one is the average here the mention not average is not mentioned here in the syllabus average is mentioned or not algebra number system time and percentage simple construct profit algebra nothing age calculation calendar so here the average topic separately is not defined but have to use of that may be or may not be so after that you will see the reasoning and in the reasoning after the reasoning you will see the section of science so science is the totally we see the first last year question whatever he ask in the examination in the science sector whatever be the question asked in the last time in the science question science that basically you will see the three sector first one is the physics second one is the chemistry and also third one is the bio so basically these are the topic on which we should have to remember कि हमें ये ध्यान देना है सो अब इस टॉपिक में क्या क्या है नया है क्या हमें देखना है सो एक नई बात है मैथ रीजनिंग और ये एंड आफ्टर दैट यू विल सी द टॉपिक ऑफ what current affair so in the current affair that have to
Mention in the CBT1 the topics as well or not. So current affair, the general science syllabus quality up to 10 standard, and current affair that have to separately mention here that what are the topic that included in the current affair. General awareness. Last year asked question in only the awareness background, not in the general background. So current affair latest award sports railway update national current affair science and technology polity economy honor and art and culture sports static gk personality other subject of importance. So these are the topic vastly, but only the important thing is there have to read the current affair, only the current affair. So award award sports winner of that a game event summits sports science and technology in advancement right now have many news come from the science and technology. So basically these are the topics basically we look into that. So first one is the latest award. So award we have cover, sports we are cover, events we are cover, national current affair as well as national current affair as well as state current affair state current affair. So these two topics have to remember. So these are the topics that we should what finish first one. So last year question just we look into there. After the calendar, pipe system, pipe system, knots, and now we see the decimals. So after the decimal, and the reason after the other subject of importance, so these eventually we have completed that one. So no need to the extra effort on that.
अभी अभी हम लोग देखने वाले हैं लास्ट ईयर एलपी क्वेश्चन आस्क्ड व्हाटएवर बी द क्वेश्चन तो जरूर आंसर की कम इन इंग्लिश आंसर की इन हिंदी एलपी जीके जीएस इंग्लिश हार्ड टू इजी. So basically, what are the type? So RRB, ALP, RRB, ALP आंसर की जीके जीएस हिंदी हार्ड टू इजी. सो गाइस अभी हम लोग देखने वाले हैं एएलपी का कंप्लीट साइंस क्वेश्चन एज वेल एज कंप्लीट मैथमेटिक्स क्वेश्चन इन 2024 व्हाटएवर आस्क्ड इन क्वेश्चन 2024 का जो भी क्वेश्चन है दैट वी हैव टू सी फर्स्ट. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 25/11 एग्जाम चालू था हम लोग का मतलब स्टार्ट था. तो 25/11 25 26 27 28 29 मेरा 29 को था शिफ्ट शायद जहाँ तक हमें याद आ रहा है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शिफ्ट 12 शिफ्ट तो ज़्यादा ही शिफ्ट था 15 शिफ्ट है क्या. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 दो 15 कुछ ज़्यादा 15 शिफ्ट में था. तो कोई नहीं फिर हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं एक से करके. अगर यदि हम ऐसे करते हैं क्लिक तो हमें मिलता है उस पर्टिकुलर शिफ्ट का पेपर जो हमें यहाँ देखने को मिलेगा. बट इसमें सेपरेटली हमें नहीं देखने को मिल रहा है साइंस का क्वेश्चन जो हमें शायद अगर ये वैसा रहता तो शायद हमारे लिए क्या होता है ज़्यादा अच्छा रहता चीज़ों को. ये भाई कहाँ का पेपर उठा दिया 66 नंबर पूरा लैंग्वेज लग रहा था साउथ इंडिया का था भाई. ये देखो गलत बात कैसे उठाया इसको खुद नहीं पता है. अब चलता है यार विच अवार्ड हैव बीन राम चौधरी फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग 2024 पद्म श्री. तो पद्म श्री पद्म विभूषण का क्वेश्चन को 2024 उठाया लेकिन अभी तो फरवरी है तब तक जनवरी में मिल चुका होगा उतना जल्दी क्वेश्चन सेट तो होगा नहीं. बट हमें ये याद करना होगा शायद ये पिछला वाला बट कोई नहीं इतना सारा सेपरेटली. ये दूसरा पेपर है क्या. एब्सोल्युटली. हम्म 11 12 15 25 exactly we have to see first what kind of interface basically they are using. क्या हो रहा भाई इधर 25 63 शायद हमें लगता ना वैसा 4:30 ये तीसरा शिफ्ट है उसका यानी 27 तारीख का सॉरी 25 तारीख का.
ये 26/11 9 बजे सुबह का शिफ्ट पेपर ही हमें दिखने वाला 1 बाय 1। 224 पेज है। कंप्लीट पेज हमें इधर दिखने वाला है। तो बट इतना सारा हमें तो थोड़ी दिखना है। ये 27 तारीख का 12:30 से 1:30। अभी तो 9 ही शिफ्ट में, 16 16 17 18 तीन ही में 9 शिफ्ट इस बार का ना। तो ये तो ठीक है बट इसमें है कि सारा है। हम्म। ये तो सारा क्वेश्चन है। चलो, ये है कंपाइलेशन है ईयर 2024 का। कंपाइलेशन हिंदी में है। आरआरबी एलपी सीबीटी 1 जीके एंड जीएस इंग्लिश हार्ड टू इजी। व्हाट इज दिस? इसको खोला जाए क्या? एलपी सीबीटी 2 मैथ इंग्लिश हार्ड टू इजी। अच्छा, ये है जीके जीएस, ये है एलपी जीके में, ये है मैथ वाला। क्या और सारा इसका सेगमेंट हमें दिखने को मिलेगा यहाँ पे? एलपी कंपाइलेशन ऑफ इंग्लिश, एलपी कंपाइलेशन इन हिंदी। ये लोग कुछ देखा नहीं है भाई, ऐसे कॉपी चिपका दिया इधर। आरबी ए आर आरआरबी एलपी सीबीटी 1 जीके जीएस इंग्लिश हार्ड टू इजी। बस वो तो कंपाइलेशन वाला, हाँ हाँ हाँ, सेपरेटली डाला है इधर लग रहा है। ए एल पी सी बी टी जीके जी एस हार्ड टू इजी, ठीक है। ए एल पी सी बी टी जीके जी एस हिंदी हार्ड टू इजी, ये वही है हिंदी में। और वो यहाँ पे ए एल पी सी बी टी मैथ का इजी टू हार्ड। अब ये बार देखते हैं यार, ये क्या है इसका इंग्लिश का, ये क्या कहानी है इधर। ये सही है, लेट होगा। अभी हम ले लेंगे अपने से। रेलवे सी बी टी 2024 जनरल साइंस एंड करंट अफेयर क्वेश्चन हार्ड टू इजी। जनरल साइंस एंड करंट अफेयर क्वेश्चन, प्लीज करंट अफेयर। ओ माय गॉड, करंट अफेयर क्वेश्चन डायरेक्ट हम यहाँ ले आए हैं क्या? व्हाट इज दिस? इम्पोर्टेंट लग तो रहा है। इजी क्वेश्चन है दैट नॉट ऑल। Katavi's department disaster management division organized the conference experience sharing capacity building disaster management अगस्त 2024। According to the latest national consumer expenditure conducted in 2024, what is the reported poverty rate in India? ये है 25/11/2025 का एग्जाम को पूछा गया। अच्छा, नीचे क्वेश्चन नंबर एग्जाम का है। क्वेश्चन पूछा गया है द डिस्कशन पेपर फील्ड 2024 जनवरी से पूछा गया, यानी क्वेश्चन 6 महीना पहले पूछा गया, 7 8 9 महीना, यानी 1 साल के पहले पूछा गया है क्वेश्चन। मतलब 1 साल के बिफोर वही सारा काम, 1 ईयर, विद इन 1 ईयर का काम होगा।
The discovery of Teller was released native 15 January 2024. B. Multi poverty India season. Question: how many questions are there? So just have to look. 46 पेजेस है. कहता है इन 2023 गरबा वाज डिक्लेयर्ड इज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को. 24 का एग्जाम है, 23 का पूछा है गरबा. असम, केरला, गुजरात. तो फालतू क्वेश्चन पूछ दिया. 9th edition of the Ranji Trophy started in October 2023. Which of the following games is the Ranji Trophy related? तो क्रिकेट के लिए रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के लिए फालतू क्वेश्चन पूछ दिया. Which of the following teams was the winner of the 17th edition of Indian Premier League 2024. 2024 का इंडियन प्रीमियर लीग कौन जीता था? कोलकाता नाइट राइडर्स जीता था. 2024 among the following cricketers India's main highest wicket taker in the test matches और आश्विन का कहानी कहता है among the following currently the governor रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आरबीआई का भी गवर्नर जो है उस समय तो शक्तिकांत दास था, अभी जो है वो है आरबीआई का कौन है? मल्होत्रा है ना. Which of the following teams was the winner of second edition of Women's Premier League? Second edition of Women's Premier League का तो बेंगलोर ही है, नॉर्थ बेंगलोर. Which among the following Indian state hosted the 2002 Hotwheel Music Festival? नागालैंड से ही रिलेट करेगा, ये नागालैंड का ही है. The Defense Research and Development Organization headquarters is located in. The Defense Research and Development Organization headquarters is located. The Defense Research and Development Organization headquarters is located in न्यू दिल्ली. डीआरडीओ का तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था भाई 29/11/2000. हाँ यही तो क्वेश्चन है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ है, डीआरडीओ का कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में. और यही बेंगलोर हो जाता है इसरो का. या सही है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन माय शिफ्ट एज वेल. और ये बेंगलोर हो जाता है इसरो का. या सही है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन माय शिफ्ट एज वेल. और ये बेंगलोर हो जाता है इसरो का. या सही है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन माय शिफ्ट एज वेल. एक सौ 49 क्वेश्चन टोटल. 15 से 149 यानी मोटा मोटी 150 तक पहुंच ही गया है क्वेश्चन में. Who among the following is currently the Governor General of India? ये शक्तिकांत उस समय था. Which of the following second is probably. Which of the following Indian state hosted in the 23rd the Defense Research and Development Organization headquarters is located? How many medals were secured by the Indian in Paris Olympics 2024? D. 4 कहता है as of September, who among the following Indian cricketer has a record of scoring 6 centuries and 522 wickets in the cricket? Co-flag bearers of Indian closing ceremony of Paris Olympics. ठीक है. Mr. Yuang Jamo Lego having captured the Padma Shri awarded the agricultural field in which ये अरुणाचल प्रदेश होता है. कहता है which of the following organization responsible for the development of the long range
Errol Desai, Gaurav Pesturi. The Federation of International Hockey FIH means World Cup. The women the following participated in United Nations World Climate Action Summit COP28 Dubai with Narendra Modi. The successfully the successfully automated trials of the Joravar like the Sangameswara temple had been submerged in the backwaters of the Srisailam project due to the heavy rainfall in the monsoon. The temple lies in the banks of the river. ये तो नर्मदा नहीं होगा कृष्णा रिवर के आसपास है तथा what recent decision did the Union Cabinet make regarding the Ayushman Bharat PMJ scheme on 11 September? Who among the following was appointed the Minister of Health and Family Welfare in June 2024? ये तो शिवराज सिंह चौहान फैमिली ये फैमिली के लिए जगत प्रकाश नड्डा इन 2023 इंडिया रिपोर्टेड द क्रूड ऑयल फ्रॉम द कंट्री रसिया वाला कहानी बीच में आया था ना यूएई हो गया कहता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स वेयर हेल्डिंग उस साल का घटना 23 का तो न्यू दिल्ली इन जून 2024 इंडियन आर्मी ओपन द खल्लूबर वॉर मेमोरियल टूरिस्ट which is located in India. Ladakh. Who among the following the author of the Why Have the Streets I Kutti cricket story? एक कट्टी है कुट्टी है पता नहीं रविचंद्र आश्विन As of March 2024, what does Morgan Stanley's research forecast for the Indian GDP? ये 6.8 वाला कहानी इसी का है What is the primary purpose of the Artara 24 Fine Arts exhibition and competition? To promote the tourism, to conduct the workshop. The concept of the Prodyoki in the Yuva Sangam program primarily focus on which of the following technology. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उस्ताद अपग्रेड स्कूल The edition of Mahakumbh 2002 organized by the Government of India in Mumbai was held to promote the edition under which of following scheme? B. Ustad. India scripted history at the 2024 edition of the Chess Olympiad. Chess में first time हुआ ऐसा whereby the fifth global standard symposium held. India scripted history at the 2024 edition of the Chess Olympiad, winning the gold medal in the both the Open and Women's Open and Women's Open and Women's section. Who among the following India's youngest Olympic medalist? Who among the following India's youngest Olympic medalist? Aman Sairabad. In the address regarding the Union Budget 2024, the Finance Ministry highlighted key areas of focus of the oncoming year. Under the Prime Minister's internship scheme launched in October 2024, candidates will receive a monthly stipend of 5,000. Whereby the fifth India US 2+2 ministerial dialogue held in 10 November 2023. 10 नवंबर 2023 29/11/2024 तो ये हो जाएगा दिल्ली में बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल कोलकाता सिंगापुर न्यू दिल्ली भोपाल शंकर बाबा पुंडिका राव
Appalkar is known for his dedication to improving the lives of those receiving education, farmers, disabled, and institute. यही तो आंसर है. In October 2000, Prime Minister Narendra Modi formally announced India's interest in the bidding for the Olympic 24, 28, 32, 36 वाला करेगा. Which natural disaster triggered the storm, flash flood and the landslide in the northern west part of India? इसे सेकंड रमाल किया था भी. कहता which of the following terms be the winner of 10th season of the Pro Kabaddi? तो भारत ही किया था ना. हरियाणा स्टीलर जीता था. तो अरे प्रो कबड्डी लिखा नॉट वर्ल्ड कबड्डी लिखा है नहीं. Indian Air Force debuted its combat aircraft in the India during the exercise. Bharatanatyam dancer and film star already awarded the Padam Shri in 1968 was honored with the. Which Indian city recorded the highest PM 2.0 in 2023? बेगूसराय. ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है. Which Indian city recorded the PM 2.5 level of 2000 metropolitan areas globally? तो 4 को दिया था ना इस बार. सॉरी क्या बोले हैं क्वेश्चन. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न उस बार 2 बार दिया था. वो शरद अंकित वो 2 लड़का था चिराग शेट्टी. तो इस बार तो 4 को दिया है 24 वाला 25 में. In 2024, with of the following Indian banks launched the Green Rupee Term Deposit. ये किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने. Who among the following the gold medal in 2024, 2020 Paralympic and silver in the 2024 Paralympics in the shooting? I don't know that name. Whose name? Actually, gold medal. क्या हुआ? क्या खाना? रोटी सब्जी रख देंगे सब दिन तो खा लेंगे. ठीक है. माँ सब कहाँ गई? Which award have been conferred to the mission Prema Dhanraj in the field of medicine? प्रेमा धनराज को भी मेडिसिन मिला. वो अच्छा पद्म भूषण पद्म श्री मिला था प्रेमा. 2023-24 का अवार्ड है. 2024 ना कि 25 में आदमी चर्चा में ही नहीं था. Which of the following is not a pillar of strategic framework for the achieving the objective of national state policy 2024? तो रजिस्ट्रेशन restriction on the private sector है. ठीक है. कहता है which award have been conferred to the Prema Dhanraj. तो देख लिए in the 2024 Union budget the government allocated funds for the development of the विश्वपथ टेम्पल कॉरिडोर के लिए कितना पैसा लगाया था? 80. ये बिहार में था ये टेम्पल ना. Where does India's rank on the corruption perception? ये तो दिखा हुआ इंडेक्स आ गया 93 नंबर का इंडेक्स. In 2024, the Ministry of Women and Child Development launched the platform to register and monitor complaints of sexual harassment of the women at the workplace. SHE box. प्रोफेसर उमेश वर्षाई वो था ये गोविंद एक क्वेश्चन लिखा हुआ है. पद्मनाभन था. पद्मनाभन को दिया है. गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है 2024 का राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार. गोविंद नाभा भी रिसेंटली हम इसे मॉक में लगाया है. Which award have been conferred to Ramchet Chaudhary in the field of मिला था शायद इससे. बी नंबर पद्म श्री मिला है. उसके बाद है जीवित पुत्रिका फेस्टिवल which was in the news for the incident in the September 2024 is primarily celebrated in which of the following states? ये तो देखा हुआ लग रहा है. ये क्या बोला? करा जीवित पुत्रिका फेस्टिवल which was in the news for the primarily celebrated in which of the following state? तो बिहार का लग रहा है फेस्टिवल. बिहार का ये. Which award have been conferred to नारायणन चक्रवर्ती of नारायण चक्रवर्ती बिहार का पद्म भूषण में पद्म श्री दिया गया. The Central Universities Amendment Bill 2023 have been passed to the establishment of the समग्र सुरक्षा सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट? तो ये तो तेलंगाना वाला. नदी उत्सव 2000 में एट द नेशनल म्यूजियम ललित कला गैलरी. और लास्ट में देखा जाए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स IGNCA में.
The Indian Air Force contingent returned to India 10 अगस्त 2024 after participating to exercise. ये 10 अगस्त 2024 को आया था। गरुड़ा, पॉप इंडिया, उदारा शक्ति, रेड फ्लैग, उदार शक्ति, मलेशिया के साथ। उदार शक्ति मलेशिया के साथ तो रेड फ्लैग होता नहीं, गरुड़ा होता नहीं, कोप इंडिया होता नहीं। अब बचा रेड फ्लैग के साथ नहीं करते हैं। आगे whoever the following appointed as the brand ambassador of the Ministry of Ports and ये तो इसको बनाया है ना पीआर सीरीज नीरज चोपड़ा मनु भाकर को बनाया है the book coaching beyond my days with the Indian cricket team in author by R series in the forward ये तो इसके वजह से लक्ष्मण का था इसका 100 और एक किताब था ये क्या 207 या कुछ किताब है 209 का के नाम से भी कुछ है बीबीएक्स लक्ष्मण का किताब IIT Bombay and that have what partnered to develop India's first quantum diamond microchip imager तो इसका आंसर हो जाएगा TCS ये नया चीज था what organization hosting the 6th international festival of India done from this तो अगर इस विशेष को देखा जाए संगीत नाटक अकेडमी तो who was appointed as the director general of the narcotics control bureau on इतना तो आंसर एक नौ अनुराग गर्ग नारकोटिक अभी भी है सीबी का ये अनुराग गर्ग ही है हाँ यही है 2000 इलेक्शन ये था 2024 का काम इस सेप्टेम्बर सुपर कंप्यूटर डेवलपमेंट इंडस्ट्री ये हमसे पूछा गया है परम सूर्या परम रुद्रा का कहानी था ये हमसे पूछा गया था ये क्वेश्चन ए में चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन जेवलिन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट on 26 जून 2024 organization DRDO handed over which of the following to the Indian Navy किसको इंडियन नेवी को दिया गया था अब आते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन अब हमारे सफर में जस्ट हम लोग अब इतना ही नजदीक जा रहे हैं वी विल हैव which Indian singer was awarded the Padma Bhushan Award of the Indian highest civilian award for the first time in India? Asha Bhosle, Usha Pathan, Alka Nagin, Lata Mangeshkar. Answer Usha Uthupa. Which Indian singer was awarded the Padma Bhushan Award? 2024 ये उषा उथू गैस नहीं कहते करप्शन परसेप्शन इंडेक्स से तो बार बार पूछ गया 93 आया था फिर एक बार अभी आया 85 2000 इन 2022 टू 2000 इम्प्रूव फ्रॉम देन इन 2022 टू देन इन 2023 ए 85 से 93 तो याद रखना 93 ही होगा who was appointed as the Director General of the सशस्त्र बल सीमा उसमें से अभी जो है अभी एसएसबी का है संजय का क्या नाम है एसएसबी संजय सिंह या संजय शाह कुछ इस तरह इन द यूनियन बजट in the Union Budget 2024 which initiative did the finance minister announce to enhance the productivity in agriculture productivity in agriculture d a comprehensive review of the agriculture research setup. The first transport aircraft was formally inducted into the Indian Air Force in 2023. The first transport aircraft. Union Cabinet approved the establishment of the International Big Cat Alliance (IBCA) with headquarters in India, Gurugram, with one-time budgetary allocation of 150 crore for a period of what? How many years? 5 years. Who among the following the non-playing captain and coach of Indian chess team at Chess Olympic 2024? Srinath Narayan. Indian women team won the chess Olympiad 2024 title by defeating which of the following teams? ये तो था अजरबैजान का टीम था
What is the name of the Bhim Singh book launched on August 11, 2024? 75 Great Revolutionaries of India. What repo rate was declared by the Reserve of India, Reserve Bank of India, Monetary Policy Committee (MCP)? हमें लगता है इसका आंसर है 6.5. In 2024, Air Marshal Tejinder Singh was appointed as the Deputy Chief of the Air Staff. In 2024, which company entered into the Memorandum of Understanding with the iCreate to promote AI setups in India? Which Indian city recorded the highest PM2.0? What is the use of high performance computing system Arca and Arunika weather forecasting? What was the employment rate in the unemployment rate in India for the individual age of 15 years and above from July 2023? For which book did Gaurav Pandey win the Sahitya Academy युवा पुरस्कार 2024? स्मृतियों के बीच घिरी, ये हमें से पूछा गया था। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ये हमसे पूछा गया था भाई। Who among the following created the record of the boys 1500 meter by completing the race of 3-1 itna in 6 Khelo India Youth Games? Rahul Sarmailia. The 63rd National Open Athletics Championship was conducted in the city of the 63 National Open Athletes. The 63 National Open Athletes Championship was conducted in the city of बेंगलुरु. ये क्वेश्चन पूछा गया था हमसे. In which India state has 13-year-old stupa discovered archaeological survey of India फरवरी में. ये तो यहाँ मध्य प्रदेश था ना, उड़ीसा में था. Which union territory became the first to achieve full functional literacy under Ulas Nawab Sir Kamari? What Ladakh? Which Sikkimese craftsman renowned through his skill creating a Sunak Thaitu lecture tradition? वो तो जोर्डन लेप्चा, सोनम से नहीं जोर्डन लेप्चा. According to the Center for Monitoring the Indian Economy, India's unemployment rate in 2024 was 9.2%. Which institute to responsible for development of the investor information analytic platform 2024? ये जो होगा IIT मद्रास. Which of the following mission will lead to the India's first human presence of the International Space Station EXIM-4? Which of the following singers was the awarded to Padam Shri in 2024 for his significant contribution to Himachal folk and classical music? Sonam Dutt Batu. Which Kashmiri wood carver was honored with the Padam Shri awarded in 2024 for his contribution in the field of art? कथा. Which Kashmiri wood carver was honored with the Padam Shri award 2024 for his contribution in the field of art? श्री गुलाम नबी धार. ये हमसे पूछा गया था. कश्मीरी वुड कार्वर है, वाज ऑनर्ड विद द पद्म श्री अवार्ड 2024 में. कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में था? कौन आदमी था वो? गुलाम नबी धार था, यही पूछा गया था. Who became the first women fighter pilot to join the Allied 18 Flying Bullets Squadron in 2024? अवनी चतुर्वेदी नहीं, मोहन सिंह. Which Indian personality played the female protagonist in the movie Sister Midnight showcased at the Cannes Film Festival? Radhika Pandey. In 2024, which program organized by the youth visit across the focusing the 5 PS Partner Yuva Sangam? For how many days will the Ashtak Lakshmi Mahotsav be celebrated in December? Therefore, how many days will the Ashtalakshmi Mahotsav be celebrated in December 2024? 3 days. In which state in the जिंजी फोर्ट? ये तो यहाँ पे ना जिंजी फोर्ट पूछा हुआ नाम बड़ा अच्छा. यूनेस्को. विच इज रिसेंटली ऑनर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस लोकेटेड? तमिलनाडु में जिंजी फोर्ट. द फाइनल मैच फॉर ईरानी ट्रॉफी 2024 which was won by the Mumbai was conducted at
कहाँ पे हो रहा था? लखनऊ में। ईरानी कब से लखनऊ में हो रहा था? ये पूछा गया, हमसे नहीं था लेकिन। एच डी कुमारास्वामी हु ऑन द मंड्या मांड्या पार्लियामेंट्री सीट इन द कर्नाटका इन 2024 जनरल इलेक्शन एंड बिकेम द मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी? ये तो जनता दल से था। What is the name of the project launched by the Ministry of Culture in 2024 so called India's artist heritage through the public installation? प्रोजेक्ट परी। ये हमसे नहीं पूछा गया था, बट ये परी का क्वेश्चन हमसे पहले भी पूछा गया था कि ये पूछा गया था परी का। हमको लग रहा है ये पूछा गया था। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं पूछा गया था, प्रोजेक्ट परी उसमें टेक्नीशियन में पूछा गया था ये क्वेश्चन। व्हाट वाज द स्कोर फॉर द गोल वन नो पॉवर्टी इन द 2023-24 एसडीजी इंडिया इंडेक्स? ए 72। ICICI Bank has partnered with which of the following agencies 2024 to provide installment credit UPI for pre-approved customer offering up to the 2 lakh credit on pay. Dance awarded the Green Energy Company Award for 2023 to meeting the hosted by the Indian Wind Power Association the Coimbatore, आंध्र प्रदेश। अंडर द एनपीएस वत्सल स्कीम, ये फिर से आ गया वत्सल स्कीम सब्सिक्वेंट मैक्सिमम लिमिट डी 1000। In 2024, which country is cooperating with India to counter China's military assertive and discussed? Japan. प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान in improve the socio-economic condition travel communities covering around dash village as per the union budget 63,000 village has been honored has been international anti-corruption championship by the US government for the year of 2023 निखिल देव मेहता पाटकर अन्ना हजारे अरुणा द्रोय निखिल देव Kailash Nayak has been conferred Padma Shri awarded 2003 in the field of science and engineering. Which rapper which rapper which rapper known for the album Halat have risen from the slums of the Dharavi of the forefront of Indian hip? Which legendary musician known as his work in the film like Amar Akbar Anthony and Bobby was awarded for the Padma Bhushan in the Republic of 2024? इसका नाम था लक्ष्मीकांत सरकार कंगना राडी बर्मन इलाई राजा। ये नहीं इलाया राजा, ये नहीं प्यारे लाल शर्मा। एग्जैक्टली प्यारे लाल शर्मा ना। What by the theme of the Financial Literacy Week 2024 conducted by the Reserve Bank of India? Option: Make a right start become the financially. Which indigenously developed technology was used in Akash NG missile during the flight test in 2024? Electro-optical seeker, B. Radio frequency seeker. How much venture capital fund would be set up for the space economy in India and announced by the finance minister Rascati, Italy on the October 12, 2024? B. Gopi Krishnan Warrior. Where the indigenously developed supercomputer developed in the 2024? Pune, Delhi and Kolkata. What is the title of Parimal Pathinam books PM Modi owned? The Kingdom like the Pride of Gujarat. Call for the Gir. यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। What is the title of Parimal Nathwani's book which was presented to PM Modi in 2024? Call for the Gir. According to the 2024-25 Indian Union budget, the government of has allocated the increasing the funding towards the 46 crore in previous year. D 6 to 9. Under which section of Telecommunication Act 2023 the Universal Service Obligation Fund remained that? Section 24A. Justice M. Fatima Bibi, the recently female judge appointed at the Supreme Court of India in 1989, she passed away at the age 93. कब मरी थी? B 23 नवंबर 2000। India has come out with a new set of the national award in the field of science, technology and the innovation known as the Rashtriya Vigyan Puraskar in the category 4 पुरस्कार in 4 category. In 2024 DRDO handed over Dash Defense Technology to IIT Bhubaneswar 9.
The joint exercise between India's Army and Kharka Corps and the Air Force were conducted in which state? Punjab. In which month was the Guru Kelucharan Mahapatra awarded 2024 organized by the Srajan Guru Kelucharan Mahapatra University? October B. September. On which date did India and USA sign their first ever cultural property agreement? 26 July 2024. As per this, how many members are there in the steering committee of Globe Network? 15. The Public Examination Prevention and Fairness Act of 2002 that aims to prevent the unfair means in the public examination and the common entrance test to across the country came into effect in which month of 2024? In Life Land. The book authored by the Vijay Lokpal on the Virat Kohli in the year 2023 is Drive on the Virat Kohli Story 2024 India Across 24 का 2000 in the three what have been the main focus on the pavilion discipline art architecture design बनाई in 2024 which bank partnered with the SmartFin as a digital supply chain finance platform? Yes Bank. Who among the following is the author of the book Neeraj Chopra, the man who made history? Norris Pratham. Who among the following the author of the book The Miracle Makers India's Cricketer Greatest Epic? Bharat Sundarshan. According to when did the Department of Promotion Industry and Internal Trade DPIIT organize the Startup Indian Innovation Week? 10 जनवरी 2024 18 जनवरी 2024 in the factor and authentication e-rail innovation subject CVIC Dash have been awarded with the Little of India's fastest growing sustainable brand for 2023-24 Suzlon Energy C Granular Renewable Energy. According to 2024 State of the Rhino report by the International Rhino Foundation, which specializes in the rhino, black rhino, the discussion paper titled was released by Niti Aayog with the Multidimensional Property Index in 2005. According to the latest NISSO Consumer Affairs Survey conducted in 2024, what is the reported poverty rate in India? Below 5%. Which department disaster management division organized to conference on the experience sharing of the capacity building disaster management in August? C. Department of Telecommunication C. Dot. So basically these are the current affairs basically asked in the examination. So in that you will see different type of the current affairs they ask in the exam basically, but most of the question asked from what which sector in the sector that we can see what sector there the sector of award. So now we have to see that the
गाइस अब हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन कि बायोलॉजी नहीं पूरा ही देख लेते हैं यार, बायोलॉजी क्या देखना है। क्वेश्चन एक से देखेंगे, हाउ मेनी क्वेश्चन विल बी देयर। तो चलो देखते हैं कितना क्वेश्चन है टोटल। गाइस यहाँ पूरा क्वेश्चन डेटा में लिख दिया जाए, अगर ये पेज यहाँ पे कर दिया जाए 30, तो कहाँ तक पहुँचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, ये भी हम अभी करंट अफेयर इधर है। 91 क्वेश्चन, ये 91 क्वेश्चन किसका है भाई। 91, ये कुछ नहीं यार, 91 क्वेश्चन 51 91 क्वेश्चन इधर से है। 91 क्वेश्चन बायोलॉजी से है ना, एग्जैक्टली बायोलॉजी का क्वेश्चन 91 है। 91 क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी 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 बायोलॉजी। 91 क्वेश्चन बायोलॉजी एग्जैक्टली। 90 क्वेश्चन 91 question biology, and how many question in the chemistry that we look into there. So in the 102 question in chemistry, which of the following is not an example of homogeneous mixture exactly. Actually if we calculate the 91 102, this one is the biology question, this one is the biology question, and this one is the chemistry question, chemistry and biology question. Biology question and chemistry question. So after the chemistry question, how many questions left to see the for the physics? 18, ये रहा फिजिक्स का क्वेश्चन। आजा भाई फिजिक्स, वी आर हियर 106 106 physics question. So in physics, in chemistry and bio, if we add this number 10 200 628 300 100 200 299, अब 300 कर सकते हैं इसको। 300 क्वेश्चन है, डिवाइडेड 15 शिफ्ट हुआ था, हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन, एग्जैक्टली मैच भी कर रहा है, ऑब्वियस है। तो नाउ विल सी, नॉट विल सी द फिजिक्स, विल सी द केमिस्ट्री फर्स्ट वन। हाउ कोवैलेंटली बॉन्डेड हैव लो बॉन्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन हैव टू सी हाउ व्हाई डू कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड हैव लो बॉइलिंग। इसमें पूछ रहा है कि इसमें लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। इसके पीछे रीजन तो वही होता है ना, हैव स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल बट वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, हैव वीक कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक होता है, विद इन मॉलिक्यूल बट वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हैव वीक कोवैलेंट नहीं, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट फोर्स, ये एग्जैक्टली सही है। और लास्ट लाइन क्या लिखा था, हैव स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड एंड विद मॉलिक्यूल एंड स्ट्रॉन्ग, ये तो कभी ना होगा। अगर स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होता तो ये कभी टूटता ही नहीं, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट लॉ कैसे होता। हैव स्ट्रॉन्ग, ये हमें चैप्टर 4 9 में दिखेगा इसका सॉल्यूशन, 1 नंबर का सॉल्यूशन। हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विद इन मॉलिक्यूल बट वीक कोवैलेंट बॉन्ड, ये गलत बात है। हैव स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये कभी हो ही नहीं सकता, वीक कोवैलेंट बॉन्ड होता थोड़ी, स्ट्रॉन्ग ही होता है ना। In which of the following are CFC not used? फायर एक्सटिंग्विशर में, ग्राइंडर्स में फायर एक्सटिंग ग्राइंडर्स एरोसोल स्प्रे में होता है, एरोसोल स्प्रे में सीएफसी होता है, नॉट यूज्ड। रेफ्रिजरेटर में तो होता है, ग्राइंडर्स में। फायर एक्सटिंग्विशर में सीएफसी तो नहीं होता, वहां सोडा वाटर फायर एक्सटिंग्विशर लेते हैं। तो शायद ये ऑप्शन का ये क्वेश्चन शायद यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है, क्वेश्चन शायद यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है। अगर देखें इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा, अगर इसका आंसर के बारे में बात करें तो हैव टू जस्ट टाइप वन अनदर सेगमेंट हियर, so find out the solution exactly what are that. So what are the question, basically question is that in which of the following CFC is not used.
in oh sorry, in which CFC is not used exactly. But they are not used in the modern grinders exactly. FC, CFC, and natural refrigerator. They are also generally absent from the modern grinders, but in visual now replaced. फायर स्टीम ग्राइंडर में यूज अभी भी होता है, फायर एक्सटिंग्विशर तो नहीं करते हैं, कोई नहीं, इसको रखते हैं मार्क रिव्यू में। What determines the chemical properties of carbon compound? Functional group, exactly. Functional group decide why does carbon make a stable compound? कार्बन किसकी वजह से स्टेबल कंपाउंड बनता है? दो कारण से हो सकता है स्टेबल। एक इसका कैटेनेशन का प्रॉपर्टीज है, कहता है ड्यू टू बिग साइज कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, नहीं ये गलत बात है। ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये कुछ हद तक सही मान लेते हैं। ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये गलत बात है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी होता है। ड्यू टू द हायर एंथैल्पी कार्बन, ये बात गलत है। ड्यू टू स्मॉल साइज फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, एग्जैक्टली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉलिड एसओ CO2, एक्चुअली ये सॉलिड SO2 CO2 बना कैसे, इसको कहते हैं ड्राई आइस भी बोला जाता है। एक्चुअली ये शादी उदी में जो देखते हैं बर्फ वो बनाया जाता है, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज जो है सॉलिड में हुआ कैसे। एक्चुअली ये गैस है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किए बिना, सॉलिड गैस सॉलिड बिना कन्वर्ट किए ये गैस बनेगा, लिक्विड नहीं कन्वर्ट होगा। तो मतलब ये है प्रेशर की वजह से हुआ होगा, प्रेशर पूरा घटा दिए होंगे अचानक, ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ होगा। गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द गैसेस स्टेट अपॉन डिक्रीजिंग द प्रेशर। टू, क्या करेंगे, डायरेक्ट एक खुला छोड़ देंगे, एक एटीएम प्रेशर पर छोड़ देंगे विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट, चला जाएगा गैस। बी नंबर सही है, इसमें कुछ नया नहीं है। बर्निंग ऑफ नेफ्थलीन ऑन ए स्पैटुला गिव्स ए रेड फ्लेम, क्लीन फ्लेम, येलो फ्लेम, सूटी 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 येलो फ्लेम देता है। एक सेकंड, लेट मी चेक। बर्निंग ऑफ naphthalene, burning of naphthalene gives flame, which flame exactly, ये आगे बोलते हैं, ये येलो फिल्म देता है इन कोलाइड। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, इन कोलाइडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एग्जांपल ऑफ फॉर्म। फॉर्म किससे बनेगा, एक्चुअली अगर फॉर्म हम देखेंगे तो फॉर्म में क्या होगा, गैस होगा कम मात्रा में, एक बार लिक्विड बनेगा, एक बार सॉलिड, सॉलिड से बनेगा तो हम जानते हैं फॉर्म होता है। जो हम लोग सीट कवर वगैरह यूज करते हैं वहां पे, ये सॉलिड फॉर्म मतलब सॉलिड में होगा फॉर्म की वजह से। तो किसके वजह से, फॉग तो नहीं बनेगा ना, फॉग क्या होता है, इसमें पानी और हवा होता है, एयर ज्यादा होता है उसमें पानी ट्रैप होता है, फॉग बनता है, ये फॉग तो अलग है। जेली तो होगा नहीं, जो जेली में क्या होता है, लिक्विड होता है जेली। मिस्ट भी नहीं होगा, पुमाइस हो सकता है फॉर्म, क्योंकि ग्रेनाइट में हवा भर देंगे तो पुमाइस बनता है। तो आंसर ए नंबर सही है। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2, तो आसान है, 20 दूनी 40 और 35 इसका होता है, 35 दूनी 70, 40 110 जहाँ पे होगा, 110 नहीं बल्कि इधर आधा बढ़ जाएगा, 111 हो जाएगा। Which of the following will be formed when dilute hydrochloric acid is added to a beaker having copper oxide? तो कहता है सॉल्यूशन विद ब्लू। अब एक यहाँ पे देखा जाए कॉपर ऑक्साइड, एक कलरलेस सॉल्यूशन इज फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू क्लोराइड। एक सॉल्यूशन एंड द ग्रीन कलर इज फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू क्लोराइड। कॉपर टू क्लोराइड का अपने आप में कलर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कलर टू का कॉपर क्लोराइड का कहता है सॉल्यूशन। क्वेश्चन को समझना है यहाँ पे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग will be found when dilute hydrochloric acid, dilute है, is weaker having copper oxide। अगर यदि पहला तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है रिएक्शन करेगा कब, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा एडेड टू द बीकर हैविंग कॉपर ऑक्साइड, ए सॉल्यूशन विद द ब्लू ग्रीन कलर, ये आंसर हो जाएगा।
ए सॉल्यूशन विथ ग्रीन कलर इज फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कलरलेस सॉल्यूशन नहीं, कलरलेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आंसर होगा ए सॉल्यूशन विद द ब्लू ग्रीन कलर इज फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कवर टू क्लोराइड। ये आंसर एकदम एग्जैक्टली सही लिखा है यहाँ पे। ये आपको ऊपर वाला भी हो जाता है लेकिन कॉपर 3 लिख दिया है, आप नोटिस नहीं किए, बट कॉपर 3 नहीं कॉपर 2 होगा एग्जैक्टली। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जब हम करेंगे 5 ही मेटल के लिए करते हैं, किसके लिए, पोटेशियम के लिए करते हैं, सोडियम के लिए करते हैं, कैल्शियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए और एल्युमिनियम के लिए, इसके बाद किसी के लिए नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो होगा, सोडियम लिख दिया तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे मेटल, दिमाग लगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए कौन सा सही बात है इधर, द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल इज नॉट टू स्मॉल। करा है कौन सा करा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोलाइडल, द साइज ऑफ द कोलाइडल ऑफ इज नॉट टू स्मॉल है भाई, छोटा तो होता है। द कोलाइडल सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर, भाई हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, दोनों गलत लाइन हो गया। कोलाइडल डू नॉट स्कैटर बीम, ये तो बीम का लाइट को करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है, टिंडल इफेक्ट करता है, ब्रोमियन मूवमेंट करता है। द कंपोनेंट ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्स मीडियम, बिल्कुल सही है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट, which of the following does not, which of the following option does not represent a property of solid। सॉलिड में कौन सा प्रॉपर्टी नहीं होता, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, ये भी सही बात है, इसका आसान नहीं होता, कौन सा सही नहीं है, ये तो सही है। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू, इट इज नॉट, इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट, नो इट इज डिफिकल्ट टू चेंज, ये आसान नहीं होता है इसको, ये कठिन होता है इसका शेप होना, कठिन नहीं, नहीं कठिन नहीं होता, कठिन होता। They have distinct boundaries and field voltage. They have a definite shape. They have a tendency to maintain their shape to substance। ये सही बात है, सब सही है। Which of the following is obtained upon heating ferrous sulfate। अगर हम ferrous sulfate को हीट करते हैं FeSO4 को, हमको सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का गैस मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड तो मिलेगा जो ब्राउन कलर का होगा, फेरिस फेरस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा, ये ऑप्शन सही है। इन केस ऑफ जेली, जेली तो वही बात हो गया ना कि जब हम सॉलिड में लिक्विड को डाल रहे होंगे जेली बनेगा। विच ऑफ द बटर भी बनेगा और पनीर भी बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्पर्स फेज, तो डिस्पर्स फेज कौन होगा, हल्का में कौन होगा, लिक्विड होगा। वो सुन रहे हैं ओनली लिक्विड, कहाँ लिक्विड भाई, इधर है। सो नाउ कैन इमेजिन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम। सो आप पता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड when sodium sulfate react with, कहता which of the following product are formed, which of the following product are formed when sodium sulfate react with barium chloride, ये तो सभी जानता है BSO4 का बनेगा, लेकिन ये व्हाइट कलर का होता है प्रेसिपिटेट BSO4 का, तो आंसर ए नंबर चला जाएगा, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से जाने के लिए ऑक्सीजन चाहता है, और अगर यदि कॉन्सेंट्रेशन के बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से बात करें, मतलब सीधा बात करें ऑस्मोसिस के माध्यम से, तो वो लिक्विड जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ए प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन का कौन सा, निलंबन का कौन सा इसमें कारण नहीं बता रहा, इसका साइज बड़ा होता है, अगर छोटा लिखा तो गलत होगा। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, थोड़ा हद तक सही है, कुछ हद तक ये बीम को स्कैटर करता है लाइट को, लेकिन थोड़ा देर छोड़ देने के बाद ये फिर ठीक है, कुछ हद तक सही मान सकते हैं इसको 50%। ए सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये सही बात है। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन नॉट सी बाय नेगेटिव, ये गलत बात है, देख सकते हैं। ये सस्पेंशन इज अनस्टेबल इन नेचर, अनस्टेबल होता है, स्टेबल थोड़ी होता है, सही है, तो सही है, बट ये गलत लिख दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कोल गैस, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्टिंग vigorously with water to produce the slack line, formation of water form H2 and O2, वह गलत बात। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, पूछ रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये है, ये नहीं है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन एटम इज करेक्ट,
अभी हम 25-20 क्वेश्चन देखेंगे, हर एक शिफ्ट का जैसे 20-20 क्वेश्चन होता है वैसे हम लोग 20-20 शिफ्ट, हम लोग टोटल कितना शिफ्ट देखने वाले, 15-20, 300 क्वेश्चन देखने वाले हमने। 20 शिफ्ट 20 क्वेश्चन देखने के बाद एक छोटा सा स्मॉल ब्रेक। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन एटम इज करेक्ट? एटम्स आर नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम होता है, कौन सा करेक्ट? ये गलत बात है, होता है। एन एटम डज नॉट कंटेन एनी पॉजिटिव चार्ज। भाई एटम के साथ कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, एटम न्यूट्रल होता है। एटम्स आर होल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एकदम करेक्ट लिखा है। एटम्स आर होल आर लिटरली न्यूट्रल, एटम्स आर पार्शियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं, गलत बात है। एन एटम डज नॉट कंटेन एनी पॉजिटिव चार्ज। सी नंबर। What compound is formed when dilute hydrochloric acid is added to a beaker containing a small amount of copper oxide? तो कॉपर ऑक्साइड है, मेटल है, तो अब समझ में आ रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कॉपर क्लोराइड बनेगा, कॉपर 4 नहीं कॉपर 2 क्लोराइड बनेगा, जिसका कलर जो होगा हमको ब्लू ग्रीन दिखेगा। ये आंसर होगा। In which of the following phenomena does a solid substance change into a liquid substance? सॉलिड सब्सटेंस तो उसको कहते हैं सॉलिड, नहीं सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड, ना सब्लिमेशन डिफ्यूजन नहीं, फ्यूजन होता है, हीट ऑफ फ्यूजन डालते हैं ना, वही फ्यूजन होता है। What happens when acid is mixed with water? What happens when acid is mixed with water? अगर जो एसिड वाटर के साथ मिक्स करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो वाटर को हटा कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज, इसको ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइजिंग ऑक्साइड को अपने रिड्यूसिंग, दूसरे को रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, अपने रिड्यूस हो जाएगा। Reduce increase the concentration of hydrogen नहीं, what happens when acid is mixed water? तो घट जाएगा, तो it will increase the concentration of hydrogen per unit volume नहीं, it will decrease, it will decrease। एक सेकंड कहता, what will, कहता what happens when acid is mixed with water? It will increase the concentration of hydronium ion per unit volume। हाइड्रोनियम आयन का पर यूनिट वॉल्यूम को एसिड कैसे बढ़ा देगा भाई? क्योंकि वाटर में डाले हैं, वाटर में डालने के बाद क्या होगा, घट जाना चाहिए, क्योंकि पहले वाटर के साथ इसके साथ जो होगा, अब पर यूनिट में उतना था, अब उतना रहेगा। तो कारा किसके सेंस में कहता है, इट विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का तो कंसंट्रेशन बढ़ा सकता है, लेकिन इटसेल्फ आयन का ये घट जाएगा। what happens when acid is added to water? Hydronium ion and that bond with water इंक्रीजिंग एसिडिटी, खट्टापन बढ़ा देगा, आयन ऑफ कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, लोअरिंग पीएच कर देगा, आयन का संख्या बढ़ जाएगा। अच्छा, एब्सोल्युटली राइट। ये थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट में रखना होगा, इसको 22 नंबर का क्वेश्चन। वन कूलम चार्ज कंटेन्स, वन कूलम चार्ज को कितना होगा, 19 वाला कहाँ, 6 to 10 पर माइनस 19 19, ये गलत है। वन कूलम चार्ज पे कितना कंटेन्स चार्ज होगा, ये थोड़ा सा अलग पूछा है। अपार्ट फ्रॉम वन कूलम चार्ज कंटेन्स, ये अलग है, उल्टा पूछती है, इसलिए 18 होगा, चूंकि 19 होता है, ऊपर जाके एक इधर से एक कूलम के लिए वैल्यू घटेगा, 18 प्लस में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इमल्सन? इमल्सन के लिए तो आसान है, फेस क्रीम तो होता है, फेस क्रीम ही तो होता है आंसर। फॉर प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द क्लोर अल्कली प्रोसेस यूज्ड? क्लोर अल्कली प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, NaCl चाहिए, NaCl चाहिए। कारा क्या, फॉर प्रिपरेशन ऑफ, अच्छा किसको बनाना है, किसको बनाने के लिए, NaCl2 का ना बनाने, ये दोनों बनाने के लिए। हाइड्रोजन गैस का भी बहुत जगह यूज कर लेते हैं, तो वो भी बनाने का, लेकिन ये दोनों ऑप्शन दिए थे, ये बनाएंगे। द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एंगस्ट्रॉम में होता है, 10^10 होता है। What is the use to remove permanent hardness of water? Permanent hardness of water को हटाएंगे, permanent hardness of water को हटाएंगे, तो इसमें सोडियम, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग ब्लीचिंग नहीं, बेकिंग सोडा नहीं, ब्लीचिंग पाउडर नहीं, वॉशिंग सोडा मार देंगे, सी नंबर का। The particle size of solution is, the particle size of solution is, the particle size of solution, the particle size of solution, the particle
स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर डायमीटर द पार्टिकल साइज ऑफ ए सॉल्यूशन सॉल्यूशन का 1 नैनोमीटर से कम ही होता है डायमीटर नहीं होता रेडियस के बारे में बात करते हैं ना डायमीटर सब डायमीटर दे दिया ना तो लेस देन 1 नैनोमीटर ऑफ डायमीटर यही आंसर करते हैं 1 नैनोमीटर से छोटा होता है बस which type of chemical reaction involves the exchange of the ions between the reactant and reagent तो अगर चेंज हो रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें नया कुछ नहीं है The which of the following option represent the subatomic particles found in the Thomson ये चीज है यहाँ क्वेश्चन है which type of the chemical reaction involve the exchange of ion तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कहता which of the following option represent the subatomic particle found in the Thomson model of an atom कहता थॉमसन मॉडल को इलेक्ट्रॉन के बारे में से बात किया है सिर्फ इलेक्ट्रॉन भाई ओनली इलेक्ट्रॉन which of the following statement is correct about the suspension अगर सस्पेंशन के बारे में बात करेगा कहता which of the following statement is correct about suspension a suspension is a heterogeneous mixture a suspension is a heterogeneous mixture a suspension is a heterogeneous mixture a suspension is a heterogeneous एक बार समझते हैं बढ़िया से पूरा बात क्लियर हो जाए कहता which of the following statement is correct about the suspension suspension में क्या heterogeneous mixture सही बात है यही आंसर होगा ज्यादा पढ़ना नहीं solid dispersion solid disperse का कोई मतलब ही नहीं है particle of the suspension are invisible to naked eye कहता particle of the suspension are नहीं देख सकते suspension में हम नहीं heterogeneous which of the following types of reaction require the formation of slack line देखो slack line जब होगा quick line से बनेगा quick line से slack line होता है calcium oxide and water तो reaction होगा combination reaction which of the following model is more related toward direct hydrocolloid toward direct अभी सोने को नहीं कर रहा है एक सेकंड रुकिए अरे रुकिए तब इसको ऑफ कर लेते हैं अपना फोन रिचार्ज करा